Hey everyone, welcome to my channel PI Fly. I hope you guys are doing great and going for the Akasa interview which I haven't updated on my channel because you people came to understand कि अब उनकी vacancies अभी आ ही रखी है for such locations and they keep updating about the vacancies हमेशा. Still I will give the link in the description so that you people will find the vacancies, and if you are not able to find the vacancies, do let me know. I will try to update a video for you people so that it will guide you how to search the vacancies and how to apply for it, because I have updated a lot of video like how to search vacancies, how to like apply for the vacancy, for the particular vacancy, how to make your profile. Already a lot of videos. Still, if you want new video with the updated version, I will update it on my channel, but if you will comment it related to, otherwise no. Okay, so I have collected few questions from the candidate who has already given online interview. It's not offline interview, because I haven't heard anything from you people ki you went for the offline interviews, like you got an invitation, you have to fly from one place to another and you went there to give the interview which was offline. So अभी तक मुझे ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला है. Still, if you have went for the interview जो कि offline हुआ है and they called you for the interview like face to face, do let me know कि वहाँ पे क्या सिनेरियो थे, क्या क्वेश्चंस पूछे गए, how was the interview firstly. So do let me know in the comment section, because I have collected 10 questions, around 10 questions for you people जो कि ऑनलाइन फर्स्ट इंटरव्यू पूछे गए थे. वी पीपल डू अंडरस्टैंड दिस कि अकासा कंडक्ट ऑनलाइन इंटरव्यू फॉर द फर्स्ट राउंड में अगर आप सिलेक्ट होते हो तो समटाइम्स दे डू कंडक्ट सेकेंड राउंड ऑल्सो ऑनलाइन. उसके बाद वो फेस टू फेस बुलाते हैं फॉर द BMI और फॉर द पर्सनल इंटरव्यू, ऑल दिस थिंग्स जो भी उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस है. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट राउंड क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू वर्किंग समवेयर? The first important question, are you working somewhere? This is the online virtual interview questions, guys, so you have to be very careful, and also don't forget to wear the whole dress, because they may ask you to stand and they may ask you to show your height or something like that, because this has happened to one of my subscribers. She said that HR asked her to stand and just show her like if she has a good weight or something like that, क्या उसका weight का related था. So उसको पूछा गया. So never ever wear only shirt, wear the skirt or wear the proper pant with tie if boys are giving the interview. ठीक है. Okay, second question is, what are your hobbies? So what are your hobbies? They have asked your hobbies. It means they want to know your hobbies more than one, like kinds of hobbies we have. So आपको दो तीन बतानी है. It's not like you have, they asked you what's your hobby. If they will ask you what's your hobby, just say one. If they asked you what's your hobbies, just let them know दो तीन चार बताना है, and don't let them know कि you love watching Instagram reels or making videos, scrolling down, lying on the bed. That's all the thing. Nine. You have to say something good, very good. ठीक है. Next question is, do you speak other languages? So yes, they will ask you, do you speak other languages? Mostly they will ask you for this, because if they are hiring for Hyderabad or Bengaluru or something like that, they will ask you this question कि क्या आपको other language आती है? Cause languages are the most important thing. It will like वो barrier खत्म करती है. Like I am a linguistic person, I do speak 6 to 7 language, so that's my like ये मेरी एक मेरी quality भी है. So आप इसको as a quality भी दे सकते हो. If you know more than 2 language, still prefer it as a quality, and इसको quality में भी आप हमेशा add करना. और अगर आपको कोई भी लैंग्वेज थोड़ी सी भी आती है ना, लाइक थोड़ी सी भी, इवन इफ यू नो योर मदर टंग, डू लेट देम नो कि मदर टंग आती है. ठीक है, सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिटी यू लाइक टू विजिट द मोस्ट? सो 1 2 3 4 फोर्थ क्वेश्चन इज, विच सिटी यू लाइक टू विजिट द मोस्ट? तो आपको वो सिटी बतानी है. इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको वहीं पे ज़्यादा ले ओवर देंगे, बस वो पूछ रहे हैं मजे के लिए, सो दैट दे कैन चेक योर कम्युनिकेशन स्किल, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विद देम और हाउ यू आर आंसरिंग देम, हाउ ब्रेव यू आर while speaking. Okay, next fifth question is, which is your favorite country you would like to go for? So which is your favorite country? कोई भी कंट्री है आपको जो भी फेवरेट है, एंड येस दे विल आस्क यू व्हाई इट इज योर फेवरेट. सो दैट्स द मोस्ट क्रिटिकल थिंग. दे विल आस्क यू व्हाई इट्स योर फेवरेट, सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड बिफोर आंसरिंग एनी क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ HR. ओके, next question. Akasa isn't famous. Why you want to join us? So who said Akasa is not famous? It's famous, guys. So anyone can say this. It's really working hard and it's really doing great in the aviation field, like not like other airlines. And so why आप बिल्कुल ऐसा बोलना ही मत कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमने तो सुन लिया वेबसाइट पे और हम आ गए इंटरव्यू के लिए. इट्स नॉट ये फेमस नहीं है, हाँ हमने तो सुना है. ऐसा कुछ आंसर नहीं करना. यू हैव टू से इट वेरी स्मार्टली सो दैट दे विल फील प्राउड टू हायर यू. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू नो समवन वर्किंग विद अकासा और एनी अदर एयरलाइन? सो सी,
वर्चुअल इंटरव्यू में वो लोग आपको ऐसा बहुत ही स्ट्रेसफुल क्वेश्चंस नहीं पूछते, दे विल जस्ट कम्युनिकेट यू विथ लाइक वन ओ वन कन्वर्सेशन होता है ना किसी के साथ में, बिकॉज यू कैन सी क्वेश्चंस विच आई एम अपडेटिंग यू पीपल, दैट्स अ वेरी बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन, बट स्टिल दे कीप रिजेक्टिंग पीपल आफ्टर ऑल द थिंग्स, क्योंकि वो एक वन ओ वन कन्वर्सेशन देखते हैं कि हाउ यू आर बेसिकली स्पीकिंग, सो जस्ट डोंट टॉक like a robot or something, just speak it nicely like hi human conversation kar raha hai, like this is how you will handle the passenger, this is how you will talk with the passenger, this is how you will talk with the person who is working with you, your colleague, all the things, ठीक है. Next question is do you have any previous company experience, share it. सो अगर आपके पास कोई प्रीवियस कंपनी के एक्सपीरियंस तो शेयर करना, और इफ़ यू डू नॉट हैव एनी कंपनी का कोई एक्सपीरियंस, सो just let them know if you have any college experience, any somewhere you have already worked for an internship during your college days, during your school days, during your 11 12th time. So ऐसा कुछ होता है ना, प्रोजेक्ट के लिए हम वर्क करते हैं, so because you don't have to say कि no I haven't worked anywhere or I do not have any experience, because वो क्वेश्चन इनवैलिड हो जाता है. तो आपको उस पर कुछ आंसर करना है, सो दैट उसको ऐसा ना लगे कि मैंने इसको ये पूछा और मुझे इसको दूसरा क्वेश्चन करना पड़ा क्योंकि ये क्वेश्चन तो नल एंड वॉइड हो गया. सो इसलिए आप कुछ आंसर तुमको ज़रूर करना. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी मोमेंट वेर यू हेल्प समवन. सो ऐसा कोई मोमेंट है जहाँ पे आपने किसी को हेल्प करी हो, सो दैट्स द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इंस्पायर्स यू द मोस्ट. सो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर क्या करती है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू लेट देम नो. एंड these are the questions which I have collected for you people, so do let me know in the comment sections if you went for the interview, if you have already given your online virtual interview, what questions they have asked you, what you want to share it to me on my comment section. Do let me know so that I will came to understand what's going on and I will try my best to help you out for this. Okay, so thanks for watching guys, don't forget to like this video and also do share this video to your loved ones who is going for the interview and who is preparing for the Akasa interview. Thanks for watching.